अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है हाइडेटिडिफॉर्म वेसिकल मोल। डेफिनेशन: इट इज़ अ बिनाइन न्यूप्लाज्म ऑफ द क्रोनिक विलाय। बिनाइन न्यूप्लाज्म्स क्या होते हैं? आर लीजन्स कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंसिव ग्रोथ फ्रीक्वेंटली एट अ स्लो रेट दैट डू नॉट इन्वेड सराउंडिंग टिश्यू और अदर ऑर्गन्स। Incidence is क्या होता है? 1 to 2,000 pregnancies in United States and Europe, but 10 times more in Asia. The incidence is higher toward the beginning and more toward the end of the childbearing period. It is 10 times more in women or 45 years old. मोलर प्रेगनेंसी क्या होती है कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर जो कि फ्लूइड फिल्ड होते हैं किस चीज़ से? कोरियोनिक विलाय से। Pathophysiology: the uterus is distended by thin-walled translucent grape-like vesicles of different sizes. These are degenerated chorionic villi filled with fluid. There is no vasculature in the chorionic villi, leads to early death and absorption of the embryo. There is trophoblastic proliferation with mitotic activity affecting both synovial and cytotrophoblastic layers. This causes excessive secretion of HCG, chorionic, thyrotrophin and progesterone. On the other hand, estrogen production is low due to absence of fetal supply of precursors. High HCG causes multiple theta lutein cysts in the ovaries is about 50% of causes. It also results in exaggeration of the normal early pregnancy symptoms and signs. Types of hydatidiform क्या है? A complete mole and partial mole. Complete mole क्या होता है? The whole conceptus is transformed into a mass of vesicle के mass of vesicle बन जाता है पूरा. No embryo is present, उसमें कोई embryo नहीं होता है. It is the result of fertilization of anculated ovum has no chromosomes, जिसके ovum के पास कोई chromosome ना हो, with a sperm which will duplicate giving rise to 46 chromosome of paternal origin only. Partial mole क्या है? A part of trophoblastic tissue only shows molar changes. Molar changes सिर्फ show करेगा. There is a fetus or at least an amniotic sac. It is the result of fertilization of an ovum by two sperms, so the chromosomal number is 69 chromosomes. Differentiation between complete and partial mole: एम्ब्रियोनिक और फीटल टिश्यू एब्सेंट होंगे कंप्लीट में और पार्शियल में प्रेजेंट. स्वेलिंग ऑफ द विलाय डिफ्यूज एंड फोकल. ट्रोफोब्लास्टिक हाइपरप्लेजिया डिफ्यूज और उसमें फोकल होगा. या कैरियोटाइप यहाँ पे 46XX 96% और 46XY 4%. वहाँ पे 69XXY और 69XYY. मैलिग्नेंट चेंजेस 5 to 10% और उसमें पार्शियली में रेयर है. डायग्नोसिस की क्या करेंगे? सिम्टम्स एमेनोरिया होगा यूजुअली ऑफ शॉर्ट पीरियड 2 to 3 months या एग्जेजरेटेड सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी स्पेशली वॉमिटिंग. वाइजाइनल ब्लीडिंग विच इज़ यूजुअली डार्क ब्राउन एंड मे बी एसोसिएटेड विद पैसेज ऑफ वेसिकल्स. एब्डोमिनल पेन उसको होगा मे बी डल एचिंग ड्यू टू रैपिड डिस्टेंशन ऑफ द यूट्रस. क्लॉकी ड्यू टू स्टार्टिंग एक्सपल्शन. सडन एंड सेवियर ड्यू टू परफोरेटिंग मोल. जनरल एग्जामिनेशन में प्री एक्लेम्पशिया डेवलप्स इनटू 20% ऑफ कॉजेज यूजुअली बिफोर 20 वीक्स गेस्टेशन. यह हाइपरथायरॉयडिज्म डेवलप्स इन 10% ऑफ केसेस मैनिफेस्टेड बाय इनलार्ज थायराइड ग्लैंड के. थायराइड ग्लैंड अगर उसका इनलार्ज हो जाए तो वो हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा. या टेकिकार्डिया एंड एलिवेटेड प्लाज्मा थायरोजिन लेवल. ब्रेस्ट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी. Abdominal examination में the uterus is larger than the period of amenorrhea in 50% of cases, corresponds to it 25% and smaller in 25% with inactive or dead mole. The uterus is duggy in consistency. Fetal parts of hot sound cannot be detected except in partial mode. लोकल एग्जामिनेशन हम लोग क्या करेंगे? पैसेज ऑफ वेसिकल्स सोर साइन होगा या बायलेटरल ओवरियन सिस्ट 5 to 20 centimeter in 50% cases.
इन्वेस्टिगेशंस में क्या आएंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करवाएंगे. इज़ अ पॉजिटिव इन हाई डायलूशन 1 to 200 इज़ हाईली सजेस्टिव, या 1/500 is surely diagnostic. In normal pregnancy, it is positive in dilution up to 1 to 100. Your serum BHCG level is highly elevated, 1 lakh. Your ultrasonography reveals the characteristic intrauterine snowstorm appearance. No identifiable fetus या bilateral ovarian cysts may be detected. या एक्सरेज क्या शो करेंगी, शो नो फोइटल स्केलेटन. कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं, ह्यूमरेज, इन्फेक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द एमनियोटिक सैक, परफोरेशन ऑफ द यूट्रस, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन या हाइपरथायरॉयडिज्म, सबसीक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ कैरियोकार्सिनोमा. ट्रीटमेंट क्या होगा, एज सून एज द डायग्नोसिस ऑफ vascular mole is established, the uterus should be evacuated. The selected method depends on the size of the uterus, whether partial expulsion has already occurred or not, the patient age and fertility desire. Cross-matched blood should be available before starting. से इन्हें कंडीशन देख के ट्रीटमेंट किया जाता है कि साइज़ उसका कितना है. Suction evacuation, it is carried out under general anesthesia but not that which relax the uterus as halothane, as it may induce severe bleeding. An infusion of 20 units oxytocin in 500 ml of 5% glucose should be maintained throughout the procedure. Dilation of the cervix is done up to a Hager's number equal to the period of amenorrhea in weeks. Example number 10 Hager for 10 weeks. Amenorrhea. The suction cannula used will be the same size also. A suction cannula which may be metal or a disposable plastic preferred in introduced into the uterine cavity. Uterine cavity में इसको डाला जाएगा. The cannula is connected to a suction pump adjusted at negative pressure of 300 to 50 mm per Hg according to the duration of pregnancy. All frozen recommended a gentle sharp curettage to the uterus after evacuation. It is preferable to wait 1 week for fear of uterine perforation. यह hysterectomy करेंगे. It may be need for evacuation of a large mole to minimize and facilitate control of bleeding. Hysterectomy क्या है, it should be considered in women over 40 years who have completed their family for fear of developing choriocarcinoma. Medical induction क्या हो गया, oxytocins and or prostaglandins may be used to encourage expulsion of the mole but always be followed by surgical evacuation. सर्जिकल सर्जरी करके रिमूव किया जाता है ज़्यादातर. Thank you. Hope you like it.